Recently, in the legal world, Honourable Madras High Court ru gote remarkable and landmark decision te asichi jaha pai as a young advocate and a fresher mu कोटि कोटि प्रणाम करुची मु तांको द्वार रे कोटि कोटि प्रणाम नमन करुची. And let me read out the decision. The Honourable Madras High Court has asked advocates and senior advocates in the state roles of the Bar Association or the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry to pay a monthly stipend of rupees 15,000 to rupees 20,000 to junior advocates engaged with them. The bench of Honourable Justice S.M. Subramaniam and Justice C. Koraput thus modified an earlier direction that the court had issued on Wednesday on 12th June 2024 asking the Bar Association in the state to pay the monthly stipend. In its order released on Thursday, the court directed the advocates to pay this amount. The court thus fixed a minimum stipend for young lawyers practicing in Chennai, Madurai and Coimbatore and a minimum stipend of rupees 15,000 for lawyers in other districts. The court added that the amount were fixed by taking into account the basic cost of living and the expenditure cost prevalent in the state. Minimum of 15,000 ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା stipend ଟେ ଗୋଟେ junior advocate को दिया जाऊ by the Bar Council and respective Bar Association. A modified order re the Honourable Justice S.M. Subramaniam and Justice C. Koraput decision ta dele on 12th June 2024. Secondly, the court made it clear that it is the duty of every stakeholder in the legal profession to create an environment where every member feels valued and is treated with respect. The court added that providing monthly stipend would encourage young lawyers and act as a catalyst for their development. बहुत जेतेबेले मु एई प्रोफेशन को आसिली मते भी बहुत कथा सुनिबा को पड़िला. तू तो चली पारुनु तू केंती की केस लड़िबू तू तो मूवमेंट करि पारुनु तू केंती केस लड़िबू किंतु thanks to all my mother's efforts and the joint belief of my seniors at school level and my friends at school level and all my juniors at school level, they helped me out to secure my bar license and clear all India bar exam. जोथि पाई मु आजी डेट रे निजको गोटे वैल्यूड मेंबर ऑफ ए लीगल वर्ल्ड बाबूची. more importantly they all should be treated with respect. जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट कहिचंती या उपरे मु गोटे छोटिया टिप्पणी टे देबी. किछि दिन तळे मु गोटे वीडियो बनेथिली जोठी जणे महिला बड़ कष्ट रे जनक पाखरे सिविल लॉ शिखिबा को जाइथिले जणे सीनियर एडवोकेट पाखकु एंड
ऑनेस्टली से फाइल बोहिले तांको पछरे बुली बुली सिविल लॉ रो प्लस एंड माइनस शिखिले किंतु से जने सक्सेसफुल एडवोकेट हेई पारले नहीं. व्हाई आई डोंट नो. एंड she was facing so much trouble that से तांकर मंथली एक्सपेंस ता निज हाथ को नहीं पारु नथिले जहा द्वारा से बाध्य है वकिलाती छाड़ी गोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे जो थर्ड पार्टी एजेंसी गुड़ा सिक्योरिटी गार्ड रो ड्यूटी प्रोवाइड करुचंती मंथली गारंटी टे पाइबा पाई से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे काम करुचंती. एडा गोटे दुखर विषय कि जे एई जिंसडा इज नॉट द फेलियर ऑफ द जूनियर but the failure of her senior, that he was unable to build her properly to face this hard world with respect. जो प्रकार लैंग्वेज मु सुनिची गोटे सीनियर एडवोकेट को पाखरे कामर टिके ब्रशअप ऑफ मेमोरी करबा पाई जो कथा गुड़ा शुणी मत बहुत खराब लगी. जो सिचुएशन रु मु जाइची से काम गुड़ा शिखिबा मु निजे कान मुड़ी ही गली नाई. जहाँ भी करी मु निजे एकुटिया करी. फेल हेले भी मु आई एम रेस्पॉन्सिबल, पास हेले भी आई एम रेस्पॉन्सिबल. And due to this reason, मु नानादिक प्रकार कथार आक्षेप डेली शुणुची. But in my career as a single lonely advocate, मु सक्सेसफुली आज पर्यंत मो क्लाइंट गुड़ा को तांको रिक्वायर्ड सर्विस डेलीवरी करिची विथ 100% ट्रैक रिकॉर्ड. टाइम रो मु गारंटी दे पारिबिनी बिकॉज आई एम लिविंग इन ए स्टेट जो टाइम रो इंपोर्टेंस ता केही बुझंतिनी. एंड आई एम लिविंग इन ए कंट्री जो टाइम रो इंपोर्टेंस ता केही सीरियसली नियंतिनी. सॉरी एती बड़ा एलिगेशन आनी की बट यही जिनसटा मु फेस करुची बोली कि डायरेक्टली ऑन दी फेस कहूँ. सेकेंडली मु रीड आउट करें. इट इज द इनकम्बेंट ड्यूटी ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स in the legal profession to provide an environment where every member of legal fraternity feel valued and treated with respect. Opinion and thoughts may differ, but the pages of our history have shown that the lawyer community as a whole have always been the torchbearer of self-expression. Self-expression in the open world and in a litigation शो करिबा पाई गोटे एडवोकेट रो रोल हाईली रहे. अब बहुत जगह रे आम कथा गुड़ा को वैल्यू दिया हुएनी जोथि पाई we are being mistreated in many ways. For example, 1cc फर्स्ट कंप्लेन केस रो फॉर्मेट टे मु टेस्टिंग करबा को बहुत सारा सीनियर एडवोकेट्स पाख को मो सांग को पठेली. तते कोन पाई दरकार कोन करिबु तू जो टाइप रो टोन रे कथावार्ता करिचंती नै की बहुत खराब लगी थी. बट स्टिल 1cc केस रो फॉर्मेट टा हमको इजीली बाय बुक रेफरेंस एंड इंटरनेट रेफरेंस रे मिल गला. और जदी कोर्ट रे
The Honourable Justice कहती कौन कौन भूल है तुम सीनियर शिखे ना कि कौन सी सीनियर प्रॉपरली शिखेवा को राजी ना बोलिकी ना धरिकी कहू ए सीनियर पाक को गलु किंतु ए टाइप रो ट्रीटमेंट देले बोलिकी by taking the advantage of the internet technology and books आमे निजे ड्राफ्ट कल स्ट्रेट रिप्लाई दबाव एंड सक्सेसफुली 1cc केस टा ठीक तरीका फाइल भी ही गला जो थी पाई एवरी हेड हैज ए रेस्पेक्ट ऑफ इट्स ओन टिके दया करी के हमको इल ट्रीट करंतुनी मु रिक्वेस्ट करुची नहले जो टाइप रो आपण माने भावलेंट होचंती आमे गोटे क्वेश्चन पचारि देले आमे भी जदि भावलेंट हे गलो आपणकर टाइप कलुनी टाइप करबा को भी आपन को कष्ट पड़िबो एति मन रखंतु द कोर्ट also made it clear that the monthly stipend should be paid to all lawyers irrespective of their gender identity. Nothing that the issue of pay disparity among gender lines is often not talked about. The court added that it was high time to make a difference. Honourable Court of Madras clear kale ki je monthly stipend should be paid to all respective lawyers irrespective of their gender identity. Gender को न देखिकिरी equally समस्तों को distribute करा जाऊ to get their output suitably. Nothing that the issue of pay disparity among gender lines is often talked about. The Honourable Court added that it was high time to make a difference. किछि गोटे चेंज आणंतु in this legal world which is technologically advanced जोथि पाई let us make a difference बोली कि नहीं कि Honourable Madras High Court emphasis करी कि direct कले in the context of fixing this minimum monthly stipend. The court would also like to bring to the fore the issue to pay disparity basing on a gender, though this systematic issue of gender pay gap is beginning to gain attention. This issue is rarely spoken about. It is high time that we start making the difference. Hence, the minimum stipend fixed above shall be extended to all junior lawyers without any kind of discrimination based on gender. The Honourable Court directed कौनसी प्रकार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को न देखिकी 15,000 टंका एंड 20,000 टंका रो अमाउंट फिक्स करा जाऊ कॉस्मोपॉलिटन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया रे 20,000 एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रे 15,000 रखा जाऊ irrespective of the genders. Irrespective of the genders. While the court recognized the welfare schemes brought in by the state government to provide aid and assistance to junior lawyer, it added that its attempt was to create an inbuilt system to support the juniors. The court added that while the profession has succeeded in making space for youth from diverse social and economic background, it was also important to keep their momentum from diminishing as they face the challenges of the profession. Honourable High Court of Madras realize कले कि जे जो यंग एडवोकेट्स गुड़ार स्पार्क थाए सेटा धीरे धीरे कमी जाए. व्हाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मंथली बेसिक रिक्वायरमेंट जो लाइफ रो परिस्थिति रे
से माने बहुत जगह रे compromise करंती and without compromising towards the judiciary system से माने तंकर सर्विस टा honestly देई पारंतु सेथि पई एई सिस्टम टा आरंभ करू. The court also remarked that young lawyers from marginalized section held great potential and through unified and concerned efforts to support them, the institution itself can move forward. The Honourable Court added that the success of any profession was weighed based on the future which was created for the newcomers in this profession. Honourable High Court of Madras recognized kole ki je young lawyer several marginalized section ru asichanti. Marginalized section bele ke economically backward achanti, ke other backward classes ru asichanti, ke several struggles karikiri jone advocate heichanti, ke irrespective of their disability advocate भी हेचंती. तो ए सबु स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करिकिरी एंड गोटे जेंडर अनबायस सिस्टम टे क्रिएट करू इन द एनवायरनमेंट सो दैट 15,000 रु 20,000 टंका मासिक स्टाइपेंड जदि बार काउंसिल दौची तो सेमानंकठु आमे सुटेबल वर्क गेन करि परिबा which is based on the future which has been created for newcomer in this profession. तांको future टा build up करंतु with a proper weight and knowledge so that एही system रे तांको contribution टा highly रहो. And lastly, the Honourable Court was hearing a plea seeking implementation and enforcement of the Advocates Welfare Fund Act 2001 to Puducherry Union. The court had previously suggested the Bar Council to fix a minimum stipend for engaging a junior lawyer to ensure his livelihood is protected. ए छोटो अमाउंट देला परे तांकर लाइवलीहुड टा प्रोटेक्टेड रहू जोटा जहा को बेस करिकिरी बहुत जिंस इन दी फ्यूचर अचीव करी हबो. एंड मु आशा करूची आम इंडिया सारा जेते भी बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अछंती and bar association present in the union territories semane ei jinsota enact korantu so that new upcoming youngster ei profession re tanko contribution ta with the necessary energy diyantu au 100% effort deikri judiciary ku serve korantu. The thing which I have read have been circulated in live law. Thoroughly आपण ए ऑर्डर रटा रो लिंक कॉपी कमेंट सेक्शन रे पाई जिबे और डिस्क्रिप्शन रे पाई जिबे जोड़ा आपण को फ्यूचर रेफरेंस पाई यूटिलाइज हेई पारिबो. एंड वीडियो जदि ठीक लागिला दया करी कि शेयर करंतु. फेसबुक रे जदि देखुचंती फेसबुक पेज रे फॉलो करंतु. यूट्यूब चैनल आकर्षण रोड्स रे जदि देखुचंती आकर्षण रोड्स को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबांतु. टिल देन always the Constitution of India should be the prime to rule this country.